श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते भक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes, so I'd like to welcome all of you in today's discussion. We are in the last phase of the second chapter, concluding theme of Chita Pradnya. Last week we devoted for revising the second chapter theme wise. In second chapter, quickly in next 2 minutes, I'll try to revise what we discovered, what we discussed in the last session. First to 10th verses, Arjuna indecision and he accepts Lord Krishna as a guru. पहले से 10वें श्लोक तक हमने वो चर्चा किया और 11वें से 30वें श्लोक तक हमने ज्ञान यानी सांख्य योग, we have discussed jnana and sankhya yoga, analysis of body and soul, is matter and spirit. So we have discussed, that is a second section. तो तीसरा जो भाग था 21 से लेके 27 तक वो था सकाम कर्म, do activities for one's own enjoyment. सकाम कर्म यानी जो कार्य करते हैं लेकिन उसमें हमको कुछ हेतु है. And after that 38 to 53 we discussed Nishma Karma Yoga, Buddhi Yoga, that is detached work without reaction. We do our activities, but we don't bother whether we benefit from it, whether we don't benefit for it, because the duty itself gives us such pleasure. So it's called as the level of duty. There are 4 kinds of people in any domain of life, for that matter. The first kind of category is a fear category. Krishna says in Bhagavad Gita also. There are different kind of people who complain, different kind of people who don't complain, but this is a little different from that. People who want to do their activities out of fear. Okay, if I don't do this, what will happen? How will I get my food, clothing, shelter? Or you can tell one approaches God through these 4 ways. Some people approach God out of fear. Some people approach God because they desire something. Some people approach God because duty. I've got such wonderful parents, I've got such wonderful atmosphere, I've got such wonderful housing, I have got such wonderful atmosphere to study. So they become grateful that yes, surely I've got so much things, I have to be grateful to Lord. It's called as duty level, kartavya buddhi. Third category, it is out of prem, out of love. So this is a category. So therefore, what is being Niskama Karma Yoga is being discussed is it is on the level of duty, the third level. Sakama Karma Yoga is nothing but desire. And what Arjuna in the beginning, first to 10 session was an indecision. It's called as fear. What will happen? What will happen? And what Krishna is telling to him in the Sita Pradnya section is out of one step before love, or what is symptom of the person who is in love, out of one who is dependent on the Almighty, on the Divine, the Supreme Person of God at the Sita Pradnya. So therefore, 38 to 53 indicates the 4th section of the second chapter, Nishkama Karma Yoga, working on the duty level without any reactions. Buddhi is mentioned, Buddhi Yoga also in this section. And 54 to 72 speaks of Sita Pradnya, the qualities of a liberated soul, Jivan Mukta. So it's a beginning of love. The symptom of love starts fructifying in full in this thing. So there are the 5 sections we are dealing. Arjuna's indecision and accepting Lord Krishna as his guru, 1 to 10. 11 to 30, Dhyana, Sankhya, analysis of body and soul, matter and spirit.
31 to 37, Sakama Karma Yoga, do activities for which gives enjoyment. What is in it for me? And the fourth one, Nishkama Karma Yoga, the duty itself is a reward. I don't want any reward. And fifth, I have to offer the results of the reward for the pleasure of a divine. Sthita Pradnya, the qualities of Sthita Pradnya. So in Sthita Pradnya, we discussed 4 questions where Arjuna is asking to him after concluding of Nishkama Karma Yoga. The 4 questions are we had discussed last week in Shlok 54. He is asking, Arjuna is asking at the conclusion that Ka Bhasha, what are the general symptoms of a Sthita Pradnya? And then second question is Kim Prabhasheta. Kim Prabhasheta, how does he speak on receiving praise or blame, affection or hate? What will he say externally or internally? That we are saying. Kim Prabhasheta. Kim Mashita, how does he sit? That means how does he control his senses when in front of sense objects? When you and Kim Vrajeta, how does he respond to the sense objects? The 4 questions are what are the general symptoms, and what is his response when somebody from externally some input comes to him, and when sitting alone, how he controls his senses, like sitting alone when he is with his own thing, when he is with his own mind, what is his thought process? And fourth is when he goes into the work field, how does he, in presence of the sense objects, how does he deals with the sense objects? So in this, we are in the last section now, 69, 70, 71, where Krishna is telling about Sthita Pradnya's concluding session. We saw last time, Yanisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagrati Samyama Yasyam Jagrati Bhutani Shanisha Pashyato Muni. Prabhu, can you allow me to share the screen? So what is night for all beings is a time of awakening for the self-control. Yes, Prabhuji. The time of awakening for all beings is night for introspective stage. Yes, this is what we were discussing last time. This time. So we'll recite this shloka today again, and we'll go for the next 69, 70, 71, 72, 4 shlokas will take answer. Yes, Yanisha Sarva Bhutana Tasyam Jagrati Samyami Yasyam Jagrati Bhutani Shanisha Pashyato Mune. So, yeah, what? Nisha is night, Sarva all, Bhutana of all living entities. Tashyam, in that Jagrati is wakeful, Samyami, the self-controlled, Yasyam, in which Jagrati are awake, Bhutani all beings, Sa, that is Nisha, night, Pashyata, for the introspective Muni. So, translation, what is the night for all living beings? The time of awakening for self-control. And the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. So here, 2 classes of intelligent man. Prabhupada is telling on the purport. There are 2 classes of intelligent man. So what is that intelligence? 2 classes of intelligence. The 2 classes of intelligence are one is Sthita Pradnya intelligence, and second is the materialistic intelligence. So now Prabhupada speaks in the first half here. Here, one is intelligent in material activities for sense gratification. He is called as materialistic intelligence, and introspective, that is Sthita Pradnya, and awake to the cultivation of self-realization. So now, the person who is introspective Sthita Pradnya, he is consciousness, he is intelligence. The person who is in the material world, he is trying to gain sense, trying to engage in sense objects for his own sense enjoyment. Prabhupada is going to write here in the purport. Activities of the introspective sage, Sthita Pradnya, what is he thinking about? Thoughtful man are night for persons materially absorbed. So what is materialistic? So the first is what Sthita Pradnya does, a thoughtful man are night for the materially absorbed. That means what is day? That is night for them. Materialistic person remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. Like most of you now, you have joined for this session. So for most of the people of this world, what is in it for me? Nothing. Am I going to get some certification from the discussion of Bhagavad Gita? Nothing. So
So I'm not getting anything, so why should I bother about understanding Bhagavad Gita? So that's the difference. The introspective sage remains alert in the night of the materialistic man. That means here night is indicating ignorance of spiritual knowledge, ignorance of what is after life, what is after death, ignorance of the purpose of life. Sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement in spiritual culture, whereas a man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy, sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always different to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. So basically, everybody has some activity to do in one's life. The purpose of that activity is that sukha sampati gara. That means we should gain some happiness from it. But when you don't get it, you become distressed. When you get it, you become happy. But what is symptom of the introspective sage? He is beyond. The introspective is always indifferent to materialistic happiness and distress. That means when you go into ocean, or when you're going on a drive in a boat on a very rough river having a lot of waves, you can't tell that when you sit on a boat, that boat will not rock, boat is going to rock. So similarly, present world where we are in, this material world, is full of waves. Samsara davan loko. It's like without anybody's desire, in a forest, there's a by friction between two trees, there is fire. Similarly, in this world, because of your desire, or your without desiring, because of somebody else's desire, or without nobody's desire, there is so much of friction, there is so much of enmity, there is so much of exchange of bad words, there is so much of distress. So in spite of that condition, Sita Prajna is indifferent. He gets some success, everybody raises him up, and he is getting a big world record, still he is indifferent. That means he knows that because of time factor, by the arrangement of the Lord, my activities have been sanctioned by the Lord, by the super soul. I'm getting this. And if some difficulties come because of my own past activities, because the super soul is sanctioning, because I have to learn a lesson from this, therefore this being sanctioned. So let me accept it. So accepts both. Like sometimes when somebody invites you for a lunch, and by the way, we like to eat very tasty items. And when you go to, especially in our own family, if you're not invited somewhere, but if you're especially in our own family, somebody's cooking and two, three people and the family members are no cooking. When somebody else cooks and little bit there is salt is less, there is masala is less, spice is less, then immediately sometimes a feedback comes, oh, this is immediately a person opens, oh, salt is less, or this masala is less. They starts finding fault, or sometimes they comment, sometimes they start making different appearances on their face to show the disgust. But when the person who's making comment cooks one day, and there is some difficulty while putting a salt, there is by mistake he puts little more or little less, there is some, because of some reason there is less spice, and when he tastes his own food which he has cooked on that day, and he's just observing, because he has been giving comments which are very, very critical, and he, while whole cooking is just thinking, I should cook this food in a very, very wonderful way so that I don't get a negative comment or critical comment, and is conscious of it. But then despite that, when he sits for his lunch and nobody gives a critical comment despite salt is less, and he starts eating it, do you think when we ourselves cook and there is some difference in spices or salt and other things, we are not going to tell critically, what is this, salt is less, spice is less? No, we will just eat it. We'll become silent. Oh my Lord, nobody has given a critical comment. So just let me eat my food and just keep quiet. That means whatever you have cooked, we should eat. This is the principle. Similarly, it's not only with one's cooking, but it is also with all the activities one goes through one's life. So whatever we go through our life, that is what we have to simply accept it. This is
my own cooked food, and let me, whether it is success, wonderful, eat and keep quiet. Whether it is distress, accept it. And because, oh, I could not do it well, but you will not make a critical comment on it. You just accept it. Therefore, when somebody else does it, therefore you have to endure, you have to be patient, you should be tolerant and not be critical. And when we ourselves do it, we should try to not go into guilt trip. We should try to accept ourselves and I'll forgive ourselves. That means learn to forgive ourselves and learn to forgive others. That means forgive and forget. This is what is one of the lessons we learn from this wonderful shloka. What is right for all living beings is the time of awakening for self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. So what is that makes a person introspective stage, Sita Prajna? What is his symptom? He is indifferent to happiness and distress. Why is indifferent to happiness and distress? Because he knows whatever activities are happening in his life, it is happening because he is the root cause of that activity. And despite he being the root cause of the activity, it has been sanctioned by Super Soul and Supreme Lord. And therefore, that activity's result is coming in his life. He triggers the activity, the nature facilitates it, and the Super Soul sanctions it. He knows this wonderful triangle. What are three things? He is triggering the activity. The nature is giving facility to facilitate that activity, and then the Super Soul sanctions. And he knows this wonderful triangle, and therefore, whether success comes, he knows that till the time I don't trigger and Lord doesn't sanction, the Prakriti doesn't facilitate, I'm not going to get happiness. And when it comes to distress, also he knows till the time I don't trigger, so till the time Prakriti doesn't facilitate, nature doesn't facilitate, and Supreme Lord doesn't sanction, I'm not going to be distressed. So basically, his trigger is very, very important. And therefore, when he triggers, rather than triggering, we should try to respond when the results come. We should not react. And therefore, we should try to respond. That is the difference between a Sita Prajna, what Lord Shri Krishna is telling, and between the normal person. When he comes across some difficulties in relationship, some difficulties in project, some difficulties in people who are around him, then he starts reacting very, very violently. But Lord Shri Krishna is telling here, Sita Prajna doesn't react. He responds. And these four questions are how Sita Prajna responds. So we are coming to 70th shloka. Apuryamanam machalam pratishtam samudramapam pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti mapnoti na kama kami. It's a very, very wonderful shloka. Apuryamanam achalam pratishtam samudramapam pravishanti yadvat तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी. Now, having discussed the principle of reacting and responding, accepting oneself as the initiator of one's activities and the results when it come, accepting that also, trusting or having faith in the Supreme Lord and Super Soul, the capacity of a materialistic person or a person who is not a Sita Prajna, the capacity of a Sita Prajna is being explained here. Example Krishna is giving here is when there is a heavy rainy season, heavy cyclone, basically when there is downpour of huge quantities of rain, and if we are having a small pond or a small well next to our home, next to our niche where we are staying, immediately when there is a heavy rainfall, within overnight, the well, the pond, the river, they start overflowing. Sometimes the bridges are broken, they cross the limit of the bridges, and sometimes the whole transportation is locked. There's so many difficulties come. But when the same rainfall happens, the same rainfall happens, and the same river and the lake water which overflows and goes and meets the ocean is not going to change. Ocean will remain in its limit. Ocean will never cross its limit. Sometimes high tide and low tide is fixed. In high tide, what is the limit? Low tide, what is the limit? That's fixed. But because of heavy monsoon,
ocean's level is not going to increase. If it rains heavily also, the ocean is going to maintain its limit. Therefore, Sita Prajna's consciousness, his ability to respond, tolerate provoking situations compared to the oceanic. Why? Because he has taken shelter of an oceanic Lord who is like omniscient, omnipotent, and omnipresent. And that is analogy Krishna is giving here. And those who are not Sita Prajna, those who are simply worried about their own enjoyment of their senses, what is in it for me? Their consciousness will be like a small puddle, or like a small well, or like to the extent like a river, or which gets overflooded. What will happen? How much big a river it is, even if Ganges it is there, it has to overflood and it will start flooding the whole civilization. But when it comes to ocean, ocean is not going to cross its limit. And that is what the ocean's response is: magnanimous. It is not going to cause anything, except sometimes in tsunami and other things come. That is not because of that, that is because of some other reason. But in general, this is the capacity of ocean. So let's go to the translation. Yes, you can read, Vikram. Yes, Prabhuji. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Prabhuji, you are on mute, Prabhuji. You are on mute, Prabhuji. Yeah. जब बहता पानी सागर में पहुंचता है तो सागर का सीमा उतना ही रहता है, तात्पुरती जितना है उतना ही रहता है। लेकिन जो कुआं का पानी या जो अलग अलग पानी रहता है, तालाब का पानी तुरंत 2-3 दिन में भर जाता है। इसी तरह से भगवान यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, पर्सन इज नॉट डिस्टर्ब बाय इंसिडेंट फ्लो ऑफ डिजायर। बारिश के पानी को इच्छाओं से तुलना कर रहे हैं भगवान। यानी हमारे मन में जो इच्छा आता है वो मौसम, बारिश का मौसम में जब पानी गिरता है उससे भगवान तुलना कर रहे हैं। और स्थित प्रज्ञा का जो ये है मति, उसको सागर की तरह तुलना कर रहे हैं। और भौतिकवादी का जो मति रहता है उसको कुएं की तरह तुलना कर रहे हैं। थोड़ा पानी गिरने से व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति क्या हो जाता है, वो तुरंत उत्तेजित हो जाता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञा रहता है कभी उत्तेजित नहीं होता। वो किसी को भी अपने मुंह से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब हनुमान जी ने लंका जलाया था तो स्थित प्रज्ञा नहीं थे, लेकिन हाँ, वो कब ठेस पहुंचाएंगे जब उनके भगवान या कोई धर्म को तोड़ रहा है या धर्म के विहीन जा रहा है, तो फिर वो खुद के नहीं लेकिन दूसरों के लिए वो करेंगे। वो दूसरों के लिए वो अपने हाथ में सब कुछ ले लेंगे। सो दिस इज अ डिफरेंस। सो भक्ति में आने के बाद या धर्म के बारे में चर्चा करने के बाद, किसी का आध्यात्मिक में आने के बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझे स्थिता प्रज्ञा बनना चाहिए, कितने भी लोग मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे तो मैं सहता रहूंगा। लेकिन उसके लिए हमको समझना चाहिए इस शास्त्र का ज्ञान हमको होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। यस प्रभु, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? Okay. Although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. That is also true of a person fixed in Krishna consciousness. As long as one has the material body, the demands of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities and he is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. That is a proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present. Because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord, he can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. Others, however, who want to fulfill
who want to fulfill desires even up to the limit of liberation. What to speak of material success, never attain peace. The fruitive workers, the salvationists, and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord, and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so called material bondage. The devotees of Krishna have no material desires, and therefore they are they are in perfect peace. So what is being explained here is very simple. कभी कभी हमको लगता है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय जाते हैं, कुछ योगी को देखते हैं कुंभ के मेले में, या तो कोई भी आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जीवन में आता है, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई पुजारी को देखते हैं, कोई ब्राह्मण को देखते हैं, हमको लगता है कि हाँ ये है आध्यात्मिकता। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अनेक आचार्य के टीका से बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव देवभूषण टीका से, आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं कि हम भगवान के पास बैठे रहे, घंटी बजाए, या हिमालय चले जाए, या सब कुछ छोड़ छाड़ के हम अपना सोसाइटी को कट करके अलग से बैठ जाए। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि भगवान की इच्छा के अनुसार हमको अपना जीवन को चलाना है। सुर और असुर का बीच में क्या फर्क है? सुर यानी भगवान के सुर में जो सुर मिलाते हैं उनको सुर बोलते हैं। असुर भगवान के सुर में जो सुर नहीं मिलाते उनको असुर बोलते हैं। इसी तरह से बाहर का जो ये है, बाहर के जो लोग हैं, मतलब मैं जब टीका लगाता हूँ, तिलक लगाता हूँ, धोती कुर्ता पहनता हूँ, और ऐसा करके जब मंदिर में आता हूँ, आध्यात्मिकता वहीं पे शुरू होता है। उसके बाद जब निकलते हैं तो ठीक है, अभी हो गया, आध्यात्मिकता एक पार्ट है, और बाकी अभी मेरा भौतिक पार्ट शुरू होता है, और इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहाँ पे भी आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये नहीं है। तो इसलिए एक्सटर्नल पे नहीं जाना चाहिए, उनको व्यक्ति के अंदर बाहरी बाहर से नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसकी इच्छा क्या चल रहा है, व्हाट इज हिज डिजायर, व्हाट इज हिज कॉन्शियसनेस। एंड देयरफॉर a person can be externally in a very opulent materialistic lifestyle, but his lifestyle in such a way that he is aligning himself with the wisdom of Lord. पहला प्रिंसिपल है जो हम गीता में सीखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है, लॉर्ड इज एग्जिस्टिंग, सो लॉर्ड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट, वी एक्सेप्ट। सेकंड प्रिंसिपल इज दैट वंस यू एक्सेप्ट गॉड, देन सेकंड थिंग इज अलाइनमेंट विद द गॉड। अगर भगवान है इस धरती में, इस धरातल में, इस भूमंडल में, इस पूरे सृष्टि में भगवान है, तो भगवान हमारे माता पिता की तरह है। जैसे घर में माता पिता रहते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार बेटे जो है उनको रहना चाहिए, इसी तरह से जो भगवान है सबसे प्रिय माता पिता है, और वो अपने सभी पूरे सृष्टि में जो भी उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके उनके हित के लिए उन्होंने वेद दिया है। कृष्ण बोलिया जीव भोगवान से करे, माया तारे चपटिया धरे। और अनादि बहिर्मुख का जो जीव रहता है, अनादि बहिर्मुख का, उसके लिए भगवान कहते हैं ताइले कर ले कृष्ण वेद पुराण। तो वेद पुराण भगवान देते हैं। तो वेद पुराण का मतलब क्या है? जिसको अपनाने से उनके जो कर्म है उसको योग बना के, कर्म योग से उसको भक्ति योग तक ला पाए और भगवान के ऊपर निर्भर हो पाए। जैसे घर में जो बेटा रहता है माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, तो उसको अपने आप पूरा विरासत मिल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे बेटा थोड़ा चालू बन के माता पिता के विरुद्ध जाके उनका साइन लेके उनको ओल्ड एज होम में डाल के खुद अपनी पत्नी के साथ यूएस में जाना चाहता है, तो क्या होता है, तुरंत उसको कुछ विरासत नहीं मिलता। तो इसलिए बाकी योगी, ज्ञानी, त्यागी, ये सब लोग क्या करते हैं, भगवान को केंद्र से निकालना चाहते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण दूंगा, कर्मी क्या करता है, जैसे ही बाहर जाएगा उसको एक पर्स मिलेगा, वो क्या, एटीएम सब कुछ लेगा, तो उसमें कैश रहेगा 10,000 20,000, उसको लेके पॉकेट में डाल के तो अपना पार्टी हो गया सैटरडे संडे का। लोनावला जाते, खंडाला जाते, तो जाके मौज मस्ती करेगा। जो दूसरा व्यक्ति आता है, त्यागी या ज्ञानी या योगी, क्या करता है, सोचता है कि ये तो मेरा नहीं है, तो मैं इसको टच नहीं करूंगा, चलो मुझे पाप नहीं पढ़ना है, मैं भागता हूँ इससे बोल के छोड़ देता है। जो भक्त रहता है, मतलब तीन के चार कैटेगरी हो गए, कर्मी हो गया, ज्ञानी हो गया, त्यागी हो गया, योगी हो गया। लेकिन भक्त जो करता है, वो क्या करता है, सोचता है कि किसने फर्श फेंका यहाँ पे,
और भारत का नागरिक होने के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, इसमें इसको उठाऊंगा, मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, किसी का आइडेंटिटी कार्ड है क्या, उसमें देखेगा, फोन नंबर देखेगा, उनको कॉल करेगा और बोलेगा आपका आपका यहाँ पे पर्स गिरा है, इसमें इतना इतना पैसा है, मैं निकट का जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाके जमा कर रहा हूँ, आप इनसे कलेक्ट कर लेना यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आप इसको यहाँ पे ले लीजिए। नहीं तो कोशिश करेगा कि उसको वहीं पे रुक के थोड़ा देने का। और बेसिकली वह पूरे सरकार के साथ, योजना के साथ नियोजन करके उस नागरिक के हित के लिए भलाई कर रहा है। तो 5 कैटेगरी के लोग हमने डिस्कस कर लिया अभी। एक है कर्मी जो भोग करेगा, तीसरे 2 3 4 कैटेगरी कौन है, और ज्ञानी, त्यागी और योगी, जो वहीं पे छोड़ देते हैं उसको और हिमालय पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनका पाप और पुण्य के बारे में चर्चा होता है कि मैं पाप में फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा। भक्त क्या सोचता है, वो शहर में रहता है और भगवान के लिए अत्यंत जो प्रिय है, वो प्रिय ये है कि सब उनके जो भी बच्चे बेटे उनको भगवान से जोड़ के उनकी सेवा में लगाना। तो भक्त वो चीज करता है, और इसलिए क्या करता है, तो पता चलता है कि कोई पर्स फेंका है, तो जो सबसे अच्छा नागरिक उसको लेके वापस उस नागरिक को जाके जिसका पर्स खो गया उसको दे देता है, कि उसको समझता है कि हाँ मैं अगर इस स्थिति में रहता तो मैं कितना पैसे के लिए ये होता था, एकदम क्रुद्ध होता था, ये मुझे चाहिए, इतना मैंने कमा के रखा है, 10,000 किसी किसी को देने के लिए, तो घर चलाने के लिए, अगर मेरे पास मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा। तो खुद को वो दूसरे के जूते में रख के देखता है कि हाँ नहीं, वो व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पहुंचाना चाहिए, इसलिए उसको लेके वापस पहुंचाता है। और ये होता है यहाँ पे, इस प्रभुपाद ये बता रहे कि अ फ्रूटी वर्कर, कर्मी, द salvationist, ज्ञानी एंड त्यागी, द योगी फॉर आफ्टर मिस्टिक पावर्स आर ऑल अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। पहले 4 कैटेगरी के लोग ये देख रहे कि मेरा भला कैसे हो और मैं कैसे इस जंजाल से मुक्त हो जाऊं। लेकिन बट द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज हैप्पी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड ही हैज नो डिजायर टू बी फुलफिल्ड। कुछ उसका इच्छा नहीं है, बाकी का भलाई होना चाहिए, भगवान के संबंध में बाकी का भलाई होना चाहिए। इन फैक्ट ही डज नॉट इवन डिजायर लिबरेशन। उसको ये भी नहीं चाहता है कि हाँ मैं इससे इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, सिर्फ भगवान का सेवा करते रहूं। जन्मनि जन्मनीश्वरी, द डिवोटी ऑफ कृष्णा हैज नो मटेरियल डिजायर एंड देयरफॉर दे आर इन परफेक्ट रहता है, उसको सिर्फ पिता को और माता को प्रसन्न करने का इच्छा रहता है। तो ऐसे ही भक्त क्या करता है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का उसका इच्छा रहता है, इसलिए क्या होता है, उसको उसको मैटर नहीं करता सुख दुख, तो डिटैच हो जाता है, मतलब भगवान के ऊपर निर्भर होता है। तो ये भक्त का स्तर है। तो अगला श्लोक हम लोग अभी चर्चा करेंगे। विहाय कामान य सर्वान पुंसाम चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। विहाय कामान, उसका कुछ इच्छा नहीं रहता, यह सर्वान पुंसाम चरति निस्पृह, बिंदास हो, विदाउट कुछ इच्छा के अनुसार चलते रहता है। निर्ममो निरहंकार, उसका कुछ मम नहीं रहता है, उसका कुछ अहंकार नहीं रहता है। स शांति अधिगच्छति, a person who has given all desires for self gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace। तो 5 कैटेगरी में हमने जो डिस्कस किया है, पहले 4 कैटेगरी में क्या रहता है, जो कर्मी में है भोगने की इच्छा रहता है, इंद्रिय तृप्ति का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, एंड हु लिव्स फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स, बेसिकली जो ज्ञानी योगी, उनको इच्छा से मुक्त होने का इच्छा रहता है, लेकिन अंत में लीन होना चाहिए, भगवान के साथ लीन होकर भगवान के भगवान बन जाना चाहते हैं। तो वो भी इच्छा एक इच्छा ही है, जो भौतिक इच्छा बोल सकते हैं। और हैज गिवन ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जो उनको कुछ भगवान बनने का भी इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ अहंकार भी नहीं है, वैसे व्यक्ति भक्त बन के भक्ति करके शांति से रह सकता है। यस प्रभु, पर्पट। Yes, देवेंद्र को, कैन यू रीड द पर्पट? okay. Yeah, sure. To become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world is a perfect stage of Krishna consciousness. One who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjuna did not want to fight for his own sense satisfaction, but when he became fully Krishna conscious,
He fought because Krishna wanted him to fight. For himself, there was no desire to fight. But for Krishna, the same Arjuna fought to his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. A materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. Isha Vasyam Idam Sarvam, and therefore he does not falsely claims proprietorship over anything. This transcendental knowledge is based on self-realization, namely knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. हरे कृष्णा। तो अभी हमने जो चर्चा किया है, अभी का मर्म क्या है, उसका मर्म एक ही है अभी जो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सबको अच्छा रहता है। जब पिछली बार मैं आप सबको बता रहा था कि एक जो छोटा बेटा रहता है, बच्चा रहता है, उसको बहुत उत्साह रहता है कि हाँ एक जगह पे मैं बैठा ना रहूं, कुछ तो कुछ करते रहूं। यहाँ पे हाथ डालता है, वहां पे हाथ डालता है, सब कुछ कर यहाँ पे वहां पे भागते रहता है। तो उसको उसको देख के हम एक छोटे बच्चे को एक रूम में छोड़ देंगे तो आप उसको ऑब्जर्व करके इस श्लोका को समझ सकते हो। यानी उस जो छोटे बच्चे हैं उसको इतना इच्छा रहता है कि यहाँ पे जाएगा, वो पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, वो सब कुछ पकड़ेगा। और मैं पिछली बार बता रहा था, आप उसके हाथ पैर बांध के उसको एक जगह पे बिठा नहीं सकते, उसको इच्छा से मुक्त नहीं कर सकते, उसको हाथ पैर बांध के आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी उसका इच्छा आएगा। तो ज्ञानी, योगी और त्यागी जो है, बड़े बड़े तपस्या करके हिमालय में जाके बोलना चाहते हैं कि मैं वो हूँ, मैं वही हूँ, एक तू ही एक वो है बोल के लीन होना चाहते ब्रह्म में जाके। लेकिन ब्रह्म में जाके लीन होना यानी एक छोटे बेटे को, बच्चे को हाथ पैर बांध के, तेरा कुछ इच्छा नहीं है, संसार में कुछ इच्छा नहीं है, कुछ अच्छा चीज करने के लिए है नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, संसार संसार मायाग्रस्त है, इसमें माया में पड़े रहोगे तो कुछ उद्धार नहीं होगा आपका बोल के ऐसा नेगेटिव 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 बोल के तो वो सोचता है कि व्यक्ति सोचना शुरू करता है, नहीं तो एक कम्युनिटी सोचना शुरू करता है, नहीं तो एक ऑर्गेनाइजेशन सोचना शुरू करता है कि प्रोपेगेंडा आता है कि हाँ ये दुनिया बेकार है, इस दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कहाँ पे जाना चाहिए? जब आपको शरीर नहीं मिलेगा, आप जब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आप एक हो जाएंगे, तब जाके आप शांति में मिलेगा आपको शांति। तो ऐसा लोग बोलना शुरू करते हैं। लेकिन उसको शांति का जो मतलब है कि वो एक जो छोटा बच्चा है इतना उत्सुक है, कर नहीं पाया तो उसको क्या करते, माता पिता उसको पैर बांध के छोड़ देते। लेकिन फिर भी क्या करेगा, वो रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा। फिर अंत में उसके माता पिता उसका हाथ छोड़ेंगे, फिर भी हाथ निकालने के बाद क्या होगा, वो अपना काम करते रहेगा, अपना नटखटा करते रहेगा। तो इस तरह से जो कर्मी, ज्ञानी, त्यागी, भोगी कैसे है, भगवान के धाम पे पहुंच नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे, ब्रह्म में जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, वहां पे हाथ पैर उनका बांधा जाता है, कुछ इच्छा नहीं रहता, ऐसा लगता है कि वो ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन वहां पे करने के लिए कुछ नहीं है। तो वापस वापस इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, फिर से उनको भौतिक शरीर मिलता है, फिर से क्या करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे सब कुछ छोड़, मतलब भक्ति करते करते, भक्ति के नाम पे, आध्यात्मिक के नाम पे सब कुछ करते रहते हैं, फिर से वापस भौतिक कार्य में लुप्त हो जाते हैं। अब देखते कभी कभी कोई बहुत बार दिल्ली जाइए हज नहाने बोलते हैं, तो हज में क्या करने लगे, हज के नाम से वो चूहे खाने लगी। तो इसी तरह से क्या करते हैं, ये आध्यात्मिक का तो बहुत दिखावा करना शुरू करते हैं लोग, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दे स्टार्ट शोइंग that we are doing so much of meditation, we are doing so much of this and that, and suddenly one fine day you'll find them explode हो जाते हैं materialistic activities. So basically what is being told here is the goal of life is not to become desireless. सब लोग बोलते हैं ना, इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छा को ही निकाल दो, बस इच्छा को निकाल दो, बिकम। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिटेट ऑन द साइलेंस। अब इस शांति में कैसे आप ध्यान लगा पाओगे? शांति मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो, शून्य पे कैसे आप ध्यान लगा पाओगे? मतलब उस शून्य पे ध्यान लगाना भी एक इच्छा है।
ये नहीं समझते हम लोग, तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं इच्छा के बिना हम नहीं रह सकते, तो इच्छा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसा इच्छा करना चाहिए इसका उदाहरण देते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंतम जगतम जगत तेन तक्तेन बुंदितम आघृतकश्चिदम। जैसे कोई ओनर रहता है, वो एक सिविल कंपनी को क्या करता है, आउटसोर्स करता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कि मुझे ये मेरा लैंड है, ये मेरे रिसोर्स है, आप मुझे ये बना के मकान बना के दो। और वो जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसको उसका सैलरी मिल जाता है, और उसके बाद सब कुछ उस ब्लूप्रिंट बना के, फाउंडेशन बना के सालों साल 2-3 साल लग जाते हैं। उसके बाद सुंदर इमारत वहाँ पे तैयार होने के बाद, उसको 5 स्टार फैसिलिटी देने के बाद, वो कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं सोचता कि ये मकान मेरा है, पूरा का पूरा उसका चाबी उसके ओनर जो उसको आउटसोर्स किया उनको जाके दे देता है। तो ओनर यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण, जो कॉन्ट्रैक्टर है हम सब है, जो इमारत है वो हमारा शरीर है, हमारे तेज है, ओज है, बल है, जिससे हम दुनिया में कुछ कर सकते हैं। opulences which we can contribute to the society for the benefit of the society we can work for. Therefore, what is a salary? Salary is the food, the clothing, the shelter, the relationship Lord has given to us. And therefore, while using it, we should never think that this body is meant for my enjoyment, but this body is meant for Lord's enjoyment, meant for His pleasure. And this is the thing. जैसे गाउंडी जब काम करता है, इमारत खड़ा करता है, करने के बाद जब कारपेंटर डज सम वर्क एंड ही मेक्स वंडरफुल furniture, and after that he doesn't think this is mine, he takes that furniture and gives back to the owner. Similarly, he takes the salary. Similarly, we have gifted this body. The maintenance of the body is coming, and we should be happy with the maintenance of the body and offer all our results for the pleasure of the Supreme Lord. This is what the Krishna conscious person is saying here. So this transcendental knowledge is based on the self-realization, namely knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna and spiritual identity. That eternal portion of living entity is therefore never on the level of Krishna. That means we can never become owner. A contractor can never become owner till the time there is a owner of the hotel. The owner of the hotel comes at the night 12 o'clock, but the manager and the cook and the waiter, everybody is there. They're trying to do their cooperation. To the degree they cooperate, they will get the salary at the end of the month. But owner is not doing anything, but why he should get the benefit? Because he is a owner, he has erected this hotel, he has given all the resources, he has given all the funding. Therefore, one has to simply align with this. ये है रियल पीस फॉर्मूला। अगर इसको समझेंगे तो कुछ भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो जाए, हम उत्तेजित नहीं होंगे, शांति में हमेशा रहेंगे। एष ब्रह्म स्थित पार्थ नैनम प्राप्य विमोहित स्थितवास्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। Yes. Can we ask Neelam Mataji if you are there? Can you read this translation? That is the way. That is the way. That is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus saturated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. Yeah, very nice. So it's a very, very wonderful translation. That is the way. What is the way? Till now what we discussed, without having any proprietorship, niramama, nirahankara, we are simply cooperators. We have to simply align, and we have to act for the pleasure of the Lord and act for the benefit of the Lord. So fourth, I had mentioned about 4 things. The first thing was acceptance of the Lord. Once you accept the Lord, भगवान पे विश्वास, दृढ़ विश्वास आता है, तो we align with the Lord. भगवान ने जो वेद पुराण दिया उसके अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत lifestyle start leading a life according to the wisdom literature of Vedic literature, especially the essence of all Vedic literature is Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. We start applying these principles in our day-to-day life. Acceptance of Lord. Second step comes alignment with the Lord. Third step is acting for the pleasure of the Lord. Then you start thinking, I'm just like a contractor and Lord is owner. I am the owner of this house, but this is simply given to me. It is under my care. I'm like a contractor. I'm just taking care of it. But Lord has to be pleased. That is acting for His pleasure. And then the fourth step is, now you are acting like a contractor. You are cooperating with the Lord. Then you want that others also should cooperate with the Lord, and they also should
join your party of becoming happy. Many times people feel, why these devotees are so much behind us? Why they want to conduct these programs? Many times in outside circle we think, okay, these people are outside people become very soft, very sweet, very they start calling us, they're behind us because they have some benefit in them. Yes, devotee also have the benefit in them. What is the benefit? That this person, I am so happy now, I am aligning with the Lord, I'm becoming a cooperator for the pleasure of the Lord. So I want that others also should get this happiness, and they should also becoming, they should align themselves and they should cooperate with the Lord. And that is why devotees want to share Krishna consciousness with others. So because they want to bring the same happiness what they're deriving to others. Yes, Mataji, please continue with the purpose. One can attain Krishna consciousness. Yes, One can Mataji. attain Yes. One can attain Krishna consciousness or a divine life at once within a second, or one may not attain such a state of state of life even after millions of births. It is only a matter of understanding and accepting the fact. Tatvanagha Maharaja attained this state of life just as a few minutes, just as a few minutes before his death, by surrendering on to Krishna. Nirvana means ending the process of materialistic life. According to Buddhist philosophy, there is only void after the completion of this material life. But the Bhagavad Gita teaches differently. Actually, life began after the completion of his material life. For the gross materialistic list, it is sufficient to know that one has to end his materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attained the stage of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotion service of Lord. Since both of them are on the absolute plane, to be engaged in the transcendental loving service of Lord is to have attained the spiritual kingdom. In the material world, there are activities of sense gratification. Whereas in the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness, even during this life, is immediate attainment of Brahman, and one who is saturated in Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. Okay. Brahman is just the opposite of matter. Therefore, Brahmi Sthiti means not on the platform of material activities. Devotional service of the Lord is accepted in Bhagavad Gita as a liberated says. Sa gunan samatithya kan brahma bahuan kalpate. Therefore, Brahmi Sthiti is a liberation from material bondage. Srila Bhakti Vinodha Thakur has summarized this second chapter of Bhagavad Gita as being the contents of the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga text in the Bhagavad Gita, Karma Yoga and the Jnana Yoga has been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has been given as a contents for the complete text.
surrender unto me. Hare Krishna. Thank you Hare so much for reading it. So this is what is being discussed here is a waiter in the hotel, the cook in the hotel, the manager in the hotel. To the degree they align with the owner, they get their salary, they get their quarters, they get their all benefits, perks, holidays, all leaves, everything they get. To the degree they are more obedient, to that degree they may get their promotions also. So similarly here, what is being told by that, if we choose from to graduate ourselves from karmi to gyani to yogi to bhakta, so what promotion will get? If we align with the Lord, accept him, align with him, act for his pleasure, act on his behalf, इस जन्म के बाद भगवान हमको अपने धाम पे लेके जाएंगे और वहां पे आध्यात्मिक शरीर में उनका सेवा करने का मौका देंगे. लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि ये शरीर में हम उसको उसका एक्टिंग करना शुरू कर दे, उसको शेप देना शुरू करे, उसको फॉलो करना शुरू करे, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करे. साधना बोलते हैं उसको, साधना बोलते हैं. अगर कोई साधना करना शुरू करता है, भक्ति का साधना, वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं उसको, रूप गोस्वामी पाद, उसको करना शुरू करेगा तो भगवान को प्रसन्न करने का इच्छा से वेद भक्ति रसामृत सिंधु उपदेश अमृत के अनुसार भक्ति करना शुरू करेंगे, भगवान का नाम जप करना शुरू करेंगे, भक्तों के साथ मिल के चर्चा करके इसका ज्ञान पाना शुरू करेंगे, तब भगवान क्या करेंगे, जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब इस शरीर के बाद भगवान हमको आध्यात्मिक शरीर देके उनके धाम पे लेके जाएंगे. इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, ब्रह्म निर्वाण किया गया है. तो यहाँ पे सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्थिति. तो इसलिए यहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत प्रामाणिकता से जो एम्प्लॉय अपने ओनर को प्रसन्न करता है, मालिक को प्रसन्न करता है, तो उसको प्रमोशन मिलता है. तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त भक्ति अच्छे से करता है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, कि उसको भगवान प्रमोट करते हैं इस आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक भौतिक जगत से उसको आध्यात्मिक जगत में पहुंचाते हैं. क्योंकि भौतिक जगत में भी वो आध्यात्मिक स्तर पे है, इसलिए उसको उसका स्तर जो मानसिक स्तर उसको क्या देता है, एक आध्यात्मिक शरीर देता है इस जन्म के बाद. तो इसके साथ हम यहाँ पे इस जो दूसरा अध्याय है इसके अंत में आए हैं, इसके कंक्लूजन में आए हैं. अगर किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, तो हम यहीं पे एक अनाउंसमेंट के साथ इस आज का जो चर्चा है इसको विराम देना चाहेंगे. विल ट्राई टू एंड दिस डिस्कशन हियर इन सम टाइम. अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कैन आस्क. So I think everybody is very clear with the whole concept what we're discussing. One thing is either you understood everything, one thing is either okay fine, let's see. So hope the first one is all of you are in the first part, you understood, and hope how to become aligned with the Lord. Very simple. दूसरा, हम हमसे बाहर कोई भी हमारा शत्रु नहीं है. इस दुनिया में कोई भी अपना अहित नहीं चाहता है. Nobody is against us, nobody is our enemy. Our own perception about others is what creates us trouble. So that is the conclusion of Sthita Prajna. Because एक पर चश्मा पहनते हैं, चश्मा लाल रहेगा तो आपको सब कुछ लाल दिखेगा. इसलिए हम most of the times what happens is we start superimposing our faults on others. Then we start doing partiality. We start doing, he is my friend, he is my enemy, and all those things. But Sthita Prajna is beyond this. His consciousness is only to please Krishna, and he knows that whatever comes in my life that is sanctioned by the Lord, he takes it as a gift of the Lord, and he is grateful to the Lord, and therefore he becomes eligible to transcend to the abode of the Lord. And therefore कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको आसानी से नियमित रूप से रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति रसामृत सिंधु में चैतन्य महाप्रभु अपने जीवनी से हमको बताया कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं, एक से शुरू करके 2-3 ऐसा धीरे धीरे एक साधना रहता है, उस साधना भक्ति को शुरू करते हैं तो हम हमारा जो मन है, मानसिक अवस्था है, वो भगवान को प्रसन्न करने का चेतना हमारे जीवन में आता है. जैसे ही शरीर और मन शुद्ध हो जाते हैं, अपने आप आत्मा को जो अगला शरीर मिलेगा वो आध्यात्मिक मिलेगा. इसलिए हमको नियमित रूप से इस जप को करना चाहिए. इस सत्संग चल रहा है इसको हर हफ्ते हमको इसमें इन्वॉल्व होके अटेंड होके कोई प्रश्न रहेगा तो उसको पूछना चाहिए, ताकि कुछ भी हमारा डाउट रहे वो दूर हो जाए.
और इस तरह से रेगुलरिटी में हम रहेंगे और माला करते रहेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे भक्तों के संग में हमको भगवान के संग में आ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो इसके बाद मैं सबको एक बताना चाहूंगा विक्रम प्रभु के आज्ञा से कि आज 12 से 2 बजे में जो हमारे वेणुगोपाल प्रभु है, जो विवेक बिंद्रा जी है, जो सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर है यूट्यूब में, वो भगवत गीता पे बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता 40 केस स्टडीज वो बताने वाले, उसमें 4 शिल प्रभुपाद के बारे में चर्चा करने वाले, जो हमारे निर्माता अपने संस्था के निर्माण आचार्य है, और उनके 125वें सालगिरह में ये प्रोग्राम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं विवेकेंद्र प्रभु जी। तो इसका लिंक मैं विक्रम प्रभु को भेजूंगा। अगर आपके पास समय रहेगा कृपया करके समय निकाल के 12 से 2 बजे के बीच में इसको अटेंड कीजिए, और इसको अटेंड करके बहुत अच्छा लगेगा आपको। यूट्यूब पे आपने सुना ही होगा, वो बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। तो इसमें ज्वाइन करने से आप प्रभुपाद के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए योगदान दे पाएंगे, और आप भी भगवत गीता में छुपे हुए राज को समझ पाएंगे। और 12 से 2 बजे अगर कुछ भी करेंगे, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, इस यूट्यूब को ऑन करके सुनते आप कर सकते हैं जो भी है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। विक्रम प्रभु, अनाउंसमेंट्स we can take. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So I have 2 points to mention as part of the announcement. So if you remember from last around 1.5 months, we have been started this chanting of 1 round every day in the night. So from our group, Abhijit and Raghavendra, unfortunately both are not there as part of today's meeting. Abhijit has got some function and Raghavendra ji is busy with something. So they have been attending every day from without miss. So we plan to give some gifts from them under the advice of Prabhuji. So we would be sending a beads, Japamala. So on which that is on which we actually chant. It has got the count of 108. So using that we actually chant every day. So we would be sending this Japamala to Raghavendra and Abhijit online, I mean through post. And we also conducted quiz last week. We have got a very good response. Almost all the members of our WhatsApp group have actually participated in that quiz. So I would like to announce the results of that. Abhijit and Varsha Mataji both have scored the maximum marks, a full marks as part of that quiz. So to appreciate their efforts, we are planning to send a book, actually a Prabhupada book, a small book called On the Way to Krishna. So we are planning to send this book to them. So thank you very much for your enthusiastic participation. So similarly, what we would do after every class, we would send a Google form through where you would find a lot of questions, not a lot of questions, basically a few questions. We can, based on the slokas that we have discussed in the previous class. So once in a month, whoever does very well in all these quizzes, they would be given with some small gift, so that it would help them to better understand what we are hearing and reading these days. So thank you. Prabhuji, over to you. Yeah. So thank you for your wonderful participation. Some devotees have been chanting regularly, so appreciating. So Vikram Prabhu and all of us are trying to send some beats. Some of you have performed very nicely in the competition. But basically the quiz, it's a remembrance, so that कितना हम इस पे चढ़ेंगे तो उतना हम भगवान के निकट में जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बाकियों ने नहीं किया है, बाकी सबने किया है, लेकिन क्योंकि हम लोग आ रहे हैं वेस्टर्न स्टडी टाइप ऑफ स्टडीज में, इसलिए उसको आध्यात्मिक स्तर पे हम नहीं बोल सकते कि आप अपने कार्यों में संतुष्ट रहो, निष्काम कर्म योग करो। नहीं, कभी कभी हमको, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से है, तो वो एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रणाली को हमको अपनाना पड़ेगा। बट भगवान के समक्ष में, भगवान के नजरों में सब लोगों को बहुत बड़े गिफ्ट मिल चुके हैं, क्योंकि आप सिर्फ आने से आपके हृदय के अंदर जो भगवान है आपको ऑब्जर्व कर चुके हैं, और वो अपना सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट सब कुछ लेके हमारा हृदय को जो मल है उसको अमल करके
उसमें निवास स्थान बनाने के लिए टेंट डाल के वहाँ पे निवास स्थान बनाने के लिए आने के लिए शुरू हो चुके हैं। इसलिए भगवान अपने साथ अपने जो लक्ष्मी है उनके साथ वास करने के लिए हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो सिर्फ भक्ति माही कार्य करने से, नियमित रूप से जप करने से, भगवता पढ़ने से तो इसका बेनिफिट है। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट जो बच्चा है वो अपने माता पिता से मिल जाता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम there are many more things you have to give to a child before taking to a lost child to his father. You have to give some toffee, you have to give some this and that. So that encouragement has to be given to just encourage them. So don't think those who win that okay we are giving this encouragement, and the others should not think that okay what is this, but everything is glorious in the journey back to God. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. And I've sent the chat. In the chat I've sent the link and other things of the video and other things. All of you can just, till the time we don't close it, copy it in your note and try to go and see the video and try to go into this see this. Once you enter here you will get the link and you can join for the world record at 12 p.m. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you for joining, taking out your time and joining for today's class, Prabhuji. Especially the point you mentioned of how a person who is commenting on others for cooking, he himself makes some salt less. That is actually very relevant and applicable, Prabhuji. Thank you for that point, Prabhuji. This is my experience. Hare Bol. Hare Krishna. आपने कॉपी किया? लीव भी करते हैं। मेरे को बहुत नींद आ रहा था, नहाया नहीं शायद इसीलिए। कब 11:30 बज गया वो करते हैं नीचे।